Financial Management Module 183, and the topic of discussion is multiple IRRs, यानी बहुत सारे rate of return एक ही प्रोजेक्ट के। ये मल्टीपल IRR का कॉन्सेप्ट क्या है और मल्टीपल IRRs क्यों हमारे पास आते हैं? क्या ये कोई बहुत कॉमन फिनोमेना है या ये कोई बहुत रेयर फिनोमेना है? मैं आपसे कहूँगा कि मल्टीपल IRRs का फिनोमेना बहुत रेयर फिनोमेना है, और आई मे से दैट इट इज़ वेरी मच थियोरेटिकल और an academic discussion. But academic discussion is also important from the viewpoint that we should know that a particular method of capital budgeting is, if applied to some very unusual cash flows, may give us results which might be confusing, which be different from what we have discussed so far in this capital budgeting. हमने अभी तक जो कैश फ्लोज कंसिडर किए डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स में या IRR की कैलकुलेशन के अंदर, हमने वो कैश फ्लोज बहुत नॉर्मल या यूजुअल कैश फ्लो लिए। यानी पहला कैश आउटफ्लो पहले साल के बिल्कुल शुरू में हो गया और दूसरा कैश इनफ्लो पहले साल के आखिर में हो गया, और फिर इसी तरह हर साल के आखिर में कैश इनफ्लो होता जा रहा है। ये जो हर साल के आखिर में कैश इनफ्लो का होना और पहले साल के शुरू में कैश आउटफ्लो का होना, ये भी एक थियोरेटिकल अजम्पशन है। यानी अगर आप ये तसव्वुर करें कि हम किसी बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि एक कैश फ्लो पहले साल के शुरू में हो, फिर दरमियान में हो, फिर पहले साल के आखिर में हो, और ये भी हो सकता है कि कैश आउटफ्लो पहले साल के बाद दूसरे और तीसरे साल में भी होती रहे। लेकिन हम उसे बेसिक लेवल पर अंडरस्टैंड करने के लिए इसको एवरेज और सिंप्लीफाइड रखते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर कैश आउटफ्लोज अगर दूसरे, तीसरे और बाद में आने वाले सालों के अंदर हो, तो वहाँ ये पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है कि हमारे पास एक से ज़्यादा IRR की वैल्यू आ जाए। Just to remind that IRR is that rate of return where the sum of present values of cash inflow becomes exactly equal to the sum of present values of outflow. यानी इनफ्लो और आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू बराबर हो जाती है। और इन अदर वर्ड्स हमने देखा था जहां पर नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, और तीसरी बात हम कह सकते हैं जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एग्जैक्टली 1 के बराबर हो जाता है। सो इफ आई रिपीट दिस, यानी IRR वो रेट ऑफ रिटर्न है जिस रेट ऑफ रिटर्न के लिए हमेशा NPV 0 होगा और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमेशा 1 होगा। NPV और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के दरमियान भी यही रिलेशन पाया जाता है कि जब भी NPV 0 होगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमेशा 1 होगा। NPV अगर 0 से ज़्यादा यानी पॉजिटिव होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी 1 से ज़्यादा होगा, और अगर NPV नेगेटिव होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी 1 से कम होगा। और इस केस में जहां NPV 0 और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 है, यही हमारा IRR है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसी सिचुएशंस या कुछ ऐसी कैश फ्लोज एग्जिस्ट करती हैं जहां पर हमारे पास एक से ज़्यादा IRR आ जाते हैं, एक से ज़्यादा ऐसे रेट होते हैं जहां पर हमारी सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर हो जाती है। So in some of these unusual cash flows, we may end up with multiple IRRs or 2 IRRs for the same project. Let's see that what kind of cash flows are these. As I mentioned earlier, these are unusual cash flows. These are not normal cash flows as we have in any business or in any investment. Like capital rationing is about putting up your money in a project which will give you inflows for many years. So if you look at that example on your screen, you would see that there are just 3 cash flows. And the first one, the first
outflow, which is at the 0 point, that is at the beginning of year 1, is 1600, and another outflow is there after the first inflow, which is 10,000, and it is at the end of year 2. यानी ऐसा रेयर इनफ्लो और आउटफ्लो का कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकल लाइफ में नज़र नहीं आता है, जहाँ पर साल के शुरू में, प्रोजेक्ट के शुरू में आउटफ्लो हो और प्रोजेक्ट का आखिरी कैश फ्लो भी आउटफ्लो हो, और इन बिटवीन हमारे पास एक कैश इनफ्लो की वैल्यू हो. बहरहाल अगर ऐसा अनयूजुअल या इससे मिलता जुलता हमारे पास कोई कैश फ्लो स्कीम हमारे पास आएगी, एंड व्हेन वी अप्लाई द IRR मेथड, एज इन दिस केस व्हेन वी अप्लाई IRR and use 25% discounting rate, you see that the sum of present values of inflow, as we have got just one inflow, which is 10,000, and it has got a present value of 8,000. And we've got two outflows, and the sum of present values of these two outflows is 16 plus 64, that is also 8,000. So we have got a negative 8,000 and a positive 8,000 value, and hence the difference is 0, or the present value of outflow and inflow is exactly the same. So 25% right on the dot is IRR. But if we go with 400% rate of return, that is, if we try to check it for 400%, we see that the initial outflow is 1600, which is at 0 point, तो उसे हम discount नहीं करेंगे. But at the first year we have got 10,000 inflow, जब उसे 400% पर discount करें तो it becomes 2,000. And at the end of second year we have got another outflow of 10,000, which is when discounted at 400% gives us minus 400. So दो outflows हैं, minus 1600 और minus 400, और एक इनफ्लो है प्लस 2000, और हम इन तीनों को अगर ऐड करें तो हमारे पास फिर आंसर 0 आता है. दैट मीन्स के इनफ्लोज और आउटफ्लो फिर बराबर हो गई, एंड 400% एज अ रिजल्ट बाय डेफिनेशन is the internal rate of return of the project. So that is the point of confusion. That is the crossroad where we have to decide which one of the two rates is correct. Actually, the answer is both are correct. And the reason is that this is an unusual cash flow. This is an impractical cash flow. So we'll conclude our discussion on multiple IRRs by saying that multiple IRRs is merely an academic discussion where we just explore the possibility of having more than one IRRs because of the nature of cash flows. अगर हमारे पास ऐसी unusual cash flows आ जाएं जैसी कि हमें यहाँ नज़र आ रही हैं, जिसमें कुछ आउटफ्लोज जो हैं वो इनफ्लोज के बाद भी हमारे पास आ रही हों, तो इसका इम्कान होता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा IRR की वैल्यू आ जाए.